तो आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क. So if we see the definition given by International Association of Social workers का अगर हम देखें definition, so it says, as you can see on your screen, that social work is a practice based profession. What does it mean? It simply means कि whatever we do in field in society is basically a practice of solving their problems. Just like doctors practice and they solve the issues of individuals, similarly it is a practice based profession, as well as it is an academic discipline that promotes social change and development. Again, please understand this: social change and development. What are the different kinds of changes taking place in your society, in your locality, in your country? That also comes under academic discipline, area of study, area of research, and that is again a part of social workers purview. Further it says social cohesion, how people are cohesive, how they are attached to one another. And if we go further on, social capital is one of the area where we also go for doing research and finding out what our role social workers can play, right? It is empowerment and liberation of people. How will you empower the people? How will you empower women which do not have any financial assistance for living sustenance and all that? So it empowers people. People may be anyone. It may be women, it may be disabled person, old age person, youth, children, any section of society. Further, definition says the principle of social justice, social samajik nyay, human rights, collective responsibility, and respect for diversity. Respect for diversity. India is a country which is having unity in diversity. That means we have different languages, different cultures, different living standards, different income groups, but still together we form our country, beautiful country India. So the principle of social justice, human rights and all these comes under social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address their life challenges and enhances well-being. So that basically means it is a science of doing good to society, welfare to society, humanities and indigenous knowledge. Indigenous, that is the knowledge which is inside our country, inside our traditions, our culture, that encourages people and motivates them to solve their issues for their well-being. And that's why this is said that social work is a welfare oriented activity, welfare related or oriented activity or plan or program, whatever you can say. So this is the definition. Now I will request my colleague Dr. Tulika Sharma ji, please discuss this definition in Hindi if you can please. जी सर ने तो बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब कर दिया है ग्लोबल डेफिनेशन. तो समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा है जो वो जुलाई 2014 में IFSW जो आम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स की जो जी उसमें उन्होंने ये डेफिनेशन बताई है. तो ऐसे है कि सामाजिक कार्य एक अभ्यास आधारित पेशा है. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये एक प्रोफेशनल पेशा है, प्रैक्टिस बेस्ड पेशा है ना. और एक अकादमिक अनुशासन है जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक सामंजस्य और लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है. मतलब लोगों के उत्थान के लिए कार्य करता है. सामाजिक न्याय के सिद्धांत सामाजिक कार्य के केंद्र बिंदु है. मतलब जस्टिस इसका सामाजिक न्याय के सिद्धांत, मिस्टेक हो गई, सामाजिक न्याय के सिद्धांत, मानवाधिकार, सामूहिक जिम्मेदारी
और विविधता के लिए सम्मान सामाजिक कार्य के केंद्र बिंदु है। मतलब इन पे पूरा फोकस्ड है, इन सभी से सामाजिक न्याय पे, मानवाधिकार पे, जो सामूहिक जिम्मेदारी हैं उन पे, और विविधता के लिए सम्मान करना, जैसा कि सर ने पहले बताया है। सामाजिक कार्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी और स्वदेशी ज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक कार्य लोगों और संरचनाओं को जीवन की चुनौतियों का समाधान करने और भलाई बढ़ाने के लिए संलग्न करता है। मतलब ओवरऑल लोगों की बेहतरी के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करता है।